Hello and a very good evening, everyone. How are you guys doing today? Hi, Archie, Ananya, Anurag, Divyansh, Prakriti, Shahnaz, good evening. Hi, Soumya, Darshan. I'm good, how are you? Anushka, Devansh, good evening. I'm doing well, Shahnaz. How about you? Good evening, Manan, Anubhav. Hi, Bhaskar, Nisarg, Anubhav. I'm good, Anubhav. How are you? Good evening, Disney. That's good, Anurag. Study should go on. The show must go on. Yes, Shahnaz. Hi, Arshid, Jonathan, Surya. That's great, Shahnaz. Was the last class based on prepositions and phrasal verbs? That's good, Anubhav. Good evening, Sujal, Harshil, Hiya, Rishant. Manan says for RC, do we have to learn all the different types of tones to start with the exercise in RSM? Not necessarily, Manan. That is something that you learn over a period of time. And not all questions are going to be based on the tones of the RCs. So you can solve the remaining questions. Not a problem. That's great, Prakriti. It's my pleasure and your hard work. Congratulations. Hi, Aryan. Mohammed, you can solve any RSM. Just check the topic which you are solving. That's not a problem. Dhruv says I'm not audible. Am I audible? What is that intelligent investor? I've never heard about it, Divyansh. I'm good, Aryan. Yes, we'll do questions today, Aryan. Mohammed, do you have a question? Anyone else any questions? Then what shall we do with the tones in RC? When we'll discuss these tones in the RCs, when we discuss the tones in the RCs in the session itself, then you'll be able to solve those questions later. As of now, you can skip them or you can just try to memorize the tones. I'm good, Bhavna. Now there are so many messages. I have 70, 80 new messages which I am not able to read as of now. I hope you understand that we need to finish the session. We need to finish the topic. One second, I'll reply to Bhaskar. Sorry, Bhaskar, nahi, Dhruv. Hi, Sunil. Anyone, agar if you have some doubt that is not related to this topic, that is prepositions and phrasal verbs, I suggest that you either post your doubts in the dot solving group or you text me after the session. Right? We have a dedicated session as of now and we need to stick to the topic. I hope you understand that, because if I'm not able to finish the topic today, I may have to schedule another lecture, and that means your syllabus completion time or date will go forward. And we do not want that, because all of you understand that time is more than money. Thank you, Aryan. If you have any unrelated doubt to the topic, please ask the doubt after the session or in the doubt solving group. Anubhav, way before the examination, don't worry about it. Aditi, talk to your mentor, they will add you. Amar Prakash, talk to the mentor. I do not know about the quant math doubt solving group. No, Aryan. Yes, Atharv.
I'm good, Darshan. Now, shall we start the session? I think 5 minutes have already passed now. Yes, Anubhav? Okay, let me see. Someone has some doubts. Rishant, do you have a doubt? You have raised your hand. If you do not have any doubt, please lower your hand. Okay, now let's start the session. So in the previous session, we solved some questions based on prepositions and phrasal verbs. What was the concept here? Prepositions के case में you have words like to, into, on. These kind of words are what we call prepositions. And phrasal verbs के case में you have a combination of verbs and adjectives, verbs and adverbs, verbs and nouns, something like that. So that is what we call phrasal verbs, right? And both are used differently. So we need to solve these questions according to the meaning that we need. And how do we memorize them? By solving more number of questions, by reading more, by learning more about phrasal verbs and prepositions. So this is the way to learn these phrasal verbs and prepositions. Shaurya, I am talking about prepositions and phrasal verbs today. This is the session, this is the continuation session of the previous session. We talked about prepositions and phrasal verbs in the previous session itself. There were a few questions that were remaining, so we are discussing those remaining questions today. It will be useful, Divyanshi. It will be useful. You should watch it. You should do error correction, Sunil. Any other questions now? Chalo. Now I'll show you the questions. So these are the questions. I think 15th one was done in the class itself. We'll start solving from 16th now. Take a look at the 16th question, everyone. Take a look at the 16th question. Try 16th. I'll launch the poll now. Are you guys done? Yes, Aryan. You should also stay hydrated. Some people have still not answered. Hi, Ishan. Aditya Narang, do you have a question? Okay, 46% of you have given option A as the correct answer, for 10% B, 18% C, and 26% D. Now, let's see which one is the correct answer. Everyone focus now. 1 second.
Okay. The question says the days begin to dash after mid summer. अगर आप नोटिस करो summer जब खत्म होती है, let's say around June month, what happens is in case of summer the days are very long. Evening में 7-7:15 तक का आपका सनलाइट रहता है. But जब मिड समर पास हो जाता है द लेंथ ऑफ द डे रिड्यूसेस. तो फिर धीरे धीरे 7 पे अंधेरा हो जाएगा, फिर 6:45, फिर 6:30, और कोल्ड आते आते तो 5:45, 6 तक के अंधेरा हो जाता है. तो डेज कैसे होने लग जाते हैं? कम लेंथ होने लग जाते हैं. तो ड्रॉ आउट इसका मतलब होता है प्रोलॉन्ग. आई विल राइट डाउन द मीनिंग हियर. प्रोलॉन्ग और एक्सटेंड समथिंग. प्रोलॉन्ग और एक्सटेंड something. That is what we mean by draw out. Draw over, what does it mean? It does not have any common meaning. So it has no meaning at all. Draw in, it means to become shorter. To become shorter, or you can also use darker. Shorter or darker. And that is what happens, the days begin to become shorter. So C is the answer. Draw down, it does not have a common meaning. So the answer has to be option C. Clear everyone? That's great, Aarti. If the poll is not visible, you can answer in the chat box. Sometimes it may happen because of some technical issues. It may come, Aditya. Common meaning as in it has no standard meaning. Drawdown does not have any standard meaning in English language. Mohammad Danish, you can speak now. Mohammad Danish, unmute yourself if you want to speak. No? Okay. Rishant, do you want to speak? You can speak now. Rishant. th, try 17th everyone. I'm launching the polls. Try 17th. कोई बात नहीं रिशांत, it's okay. नो अथर्व. कार्तिक, नागपुर में तो अभी बारिश नहीं हुई उतनी. तुम बताओ, तुम कहाँ रहते हो? नहीं ईशान, एवरीथिंग इज फाइन. No interviews are going as of now. Prakriti, for phrasal verbs you need to read these phrasal verbs from the books, from the material that I provided. मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था, और जिन लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया था मैंने उनको फॉरवर्ड भी किए हैं. तो आपको उन मटेरियल में से इनको रीड करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा. जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना जल्दी मेमोराइज कर सकते हो. नो, हाँ ध्रुव, आई एम नॉट श्योर. रक्षिता, 92% of you have given option B as the correct answer. Let's see. They tried to dash their argument but I refused. Draw in to. अब in के बाद में space आ गया तो it does not have any meaning. इसका कोई meaning नहीं होता. Draw me into. To draw someone into something means to involve someone into something. Involve someone into something. And that is what they are trying to do. They are trying to involve me, include me in their argument, but I refuse to do so. Alright, right. So that means this could be correct. Draw back. Draw back matlab go back. Okay. So it means go back.
Draw down in has no meaning at all. So answer has to be option B. Question number 18 everyone. I'm launching the poll now. Let's try to speed up a bit. 18. Try. Just text me that I want the PDF of prepositions and phrasal verbs. I'll forward you the PDFs. कहाँ हर्ष बारिश हो रही है नागपुर में? मुझे ही नहीं पता है, मैं दिन भर सेंटर पे बैठा रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है. Aryan, I am not aware about the answer to the question because I do not schedule the classes. The classes are scheduled by someone else. I deliver the classes. And that I may know the reason. That may be because most of the time I am delivering lectures. So maybe because I'm always busy. That's why मेरे lectures कम होते होंगे थोड़े. Done. 92% of you have given option B as the correct answer. Let's see. So 18th one. Be a good and dash your vegetables. Be a good boy ऐसा कुछ हो सकता था. Be a good and eat through your vegetables. Do you eat through your vegetables or do you eat your vegetables? तो eat through तो कुछ नहीं होता है. Vegetables के through क्या eat करना है? हाँ या ना? इसका मतलब होता है to consume completely or to endure something that is difficult. So eat through means to endure something that is very difficult. Endure something that is difficult. That is eat through. Okay. Eat up. It means to consume enthusiastically or completely. Consume enthusiastically. और you can also say completely. और यही तो मीनिंग आएगा. सॉरी completely. अब ये endure और consume दोनों में डिफरेंस होता है. endure मतलब सहन करना और consume मतलब खाना. तो वेजिटेबल की बात चल रही तो मतलब खाना होना चाहिए. तो ऑप्शन बी. Eat in. It means to dine at home instead of a restaurant. Dine मतलब खाना. At home is eat in. Then eat away. Eat away means to gradually erode or consume. Gradually erode or consume. For example, the door was eaten away by termites. Gradually वो door termites ने खा लिया और खत्म कर दिया. तो eaten away तो gradually होता है over a period of time. हमको यहाँ पे क्या करना है? Vegetables को अभी खाना है. तो that D cannot be the correct answer. B has to be the correct answer. Question number 19. Everyone try. Eat through का मतलब होता है to endure something that is difficult. For example, let's say someone is beating me and I am enduring it, so I am eating through it. Got it? Phrasal verbs may have different meaning from the literal meaning. Question number 19. I am launching the poll now. So you understand, if you are posting a doubt and I am not answering your doubt, that may be because I am not able to see it, because there are so many doubts. Literally every second I open a text box there are 100 doubts. Now can anyone tell me, can I answer all the 100 doubts in 1 hour and 15 minutes and also complete questions from the sheet? You answer the question now. Can I do that? That is not physically possible, right? So that means अगर कोई doubt छूट रहा है वो intentionally नहीं छूट रहा है. There are so many doubts that I cannot read all of them. तो अगर ऐसा है that I am not answering your question, there are other ways to ask the questions. For example, you can text me on Telegram. Do you agree or not? Otherwise, I will dedicate this entire session to doubt solving. Then you cannot complain that sir did not finish the topic. फिर ऐसा है तो बता दो, मैं वैसा करता हूँ. मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट द पॉइंट इज आई हैव टू फिनिश द टॉपिक एज वेल ना. डाउट्स तो कभी भी सॉल्व हो जाएंगे.
Why it will not be eat away? Here eat away means to gradually eat something over a very long period of time. For example, the termites eating away the door, the wood of the door. That takes place over, let's say 15 days, 100 days, something like that. अब वेजिटेबल खाने की हमको बात चल रही है, तो वेजिटेबल्स अभी खाना है 100 डेज बाद खाना है? ऑब्वियसली अभी. सो दैट इज वाई ईट इन मतलब होता है घर पे खाना खाना इंस्टेड ऑफ अ रेस्टोरेंट. दैट इज ईट इन. Soumya, there is a PDF of idioms, phrases and phrasal verbs. If any one of you wants those PDFs, you have to text me after the session. Also, please remember that I am busy for most part of the day. So if I do not respond to you, I will respond to you after some time. Okay? Sometimes I have noticed that if I do not reply within 5 minutes or 10 minutes, the students start sending me question marks. Please understand that I also deliver offline lectures. I also deliver lectures in other batches. So that means if I am not delivering a lecture in your batch, that does not mean I am free. %85% of you have given option B as the correct answer. But there are contenders for other options as well. चलो देख लेते हैं. So 19th one is she dash all the items quickly. What did she do? Items को उसने क्या किया? Ate in. अभी ate in मैंने बताया था. Dine at home. है या ना? Dine at home. But ये quickly और items को खाना इसमें कैसे, मतलब उसका क्या कनेक्शन है quickly का? No connection, so becomes incorrect. She ate up अभी बताया था to finish something. See, it's written to consume enthusiastically, to consume something completely. So she finished all the items completely. It's correct. Finished. She ate out. Ate out means to dine at a restaurant. Exactly opposite of ate in. Dine at a restaurant. Ate away. What does ate away mean? To gradually erode. अभी बताया था. Same meaning, which is written here. So answer has to be option B. Okay. चलो question number 20 everyone. Try. दिव्यांशी एट आउट का मतलब हो जाएगा दैट शी इज ईटिंग समथिंग एट अ रेस्टोरेंट. शी एट आउट कहां गया? शी एट आउट ऑल द आइटम्स क्विकली. अगर मैंने एट आउट बोला है तो आई वुड नीड टू प्रोवाइड सम रेफरेंस टू अ रेस्टोरेंट. हाँ या ना? वो तो आया ही नहीं. तो दैट इज वाई उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? वो सारे आइटम को उसने बहुत जल्दी खा लिया. दैट इज द मीनिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर. दैट्स वाई ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. Okay, question number 20. 76% of you have given option C as the correct answer. Chalo, let's try to figure out the meaning. The number of students has dash fall back on. अब देखो has लिखा है मतलब verb का third form आना चाहिए. Do you agree or not? अब fall तो verb का first form होता है. उसके basis पे you could eliminate all the options. Fall is first form of the verb. Fall is first form of the verb. Fallen is V3 form. Has plus V3 is present perfect tense. Could be correct. Fall is first form. Means answer क्या होने वाला है? What will be the answer? It is incorrect. It is incorrect. It is incorrect. C is the correct answer. अब fall back on का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है to rely on something, particularly in difficult situations. To depend or rely on someone or something. On someone or something in difficult situations. I won't be able to write down all the meanings here because of space constraints. But I hope you understand. Okay. Then we have fall behind. Fall behind matlab to fail to keep up. I was falling behind in the number of attempts. Something like that. So falling behind means to fail to keep up with something. Fail to keep up. किसी के pace से कम काम करना.
fallen off, it means to decrease or decline. Decrease or decline. Fall out of, fall out of, ये ऑफ इनकरेक्ट होता है. फॉल आउट ओ एफ हो सकता है, तो दैट इज इनकरेक्ट. देन इसका कोई मीनिंग नहीं होता है. सो आंसर हैज टू बी ऑप्शन सी. क्वेश्चन 21. नहीं, द नंबर इज ऑलवेज सिंगुलर. द सब्जेक्ट हियर इज द नंबर इज ऑलवेज सिंगुलर, तो हैज आएगा यहां पर. देखो ध्रुव, यहां पर क्या लिखा है? हैज लिखा है. अब हैज के बाद में भी ऑलवेज हैव द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट परफेक्ट के केस में हैज के बाद में तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है ना, तो थर्ड फॉर्म इसमें से कौन सा है? फॉल तो फर्स्ट फॉर्म होता है. फॉल, फेल, फॉलन. फॉलन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो आंसर हैज टू बी ऑप्शन सी. देन उसके बेसिस पे भी सॉल्व हो रहा है. नहीं, अरे भाई, इसमें ओ डबल एफ ही आता है. फॉलन ऑफ इज ओ डबल एफ. आउट ऑफ में ओ डबल एफ नहीं आता है. आउट ऑफ में ओ एफ आता है. ओके समृद्धि, yes, you can speak now, Samriddhi. Good evening, sir. Yes, good evening. Sir, in question number 20, like if we are talking about the number of student has, if we do write fall behind, then what like if we are comparing it with the number of students, statistical data, so why can't we write fall behind if we are comparing it with some other number of students? Okay. So there are two reasons why we cannot use fall behind here. One second, I'll just mute you again. The first reason is because has is written, we cannot use the first form of the verb. That will make the sentence grammatically incorrect. This is the first reason. Second reason is fall behind should be followed by fall behind what? If I am falling behind, I am falling behind you. So you has to be there. Right? So the number of students has fall behind, or let's say fallen behind, but fallen behind what? That is not given. That's why B cannot be the correct answer. Clear, Samriddhi? Okay. Chalo, question number 21 now. Try question number 21. I'll launch the poll. Try. Bhakti, you may need to figure out the correct phrasal verb or identify the part which has a correct phrasal verb, something like that. 42% A, 51% B, but C and D में भी कुछ लोग हैं. देखते हैं. The essay started interestingly but failed to follow up. देखो follow up क्या होता है? Follow up is done by a person. What does it mean? It means to continue or build upon something previously mentioned. To continue or build upon something that is previously mentioned. Build upon something previously mentioned. This is what we mean by follow up. But follow up is done by a person. We cannot say the essay followed up. No. अब follow through का क्या मतलब होता है? Follow through means to complete or execute as planned. तो अब लिखने के लिए जगह नहीं है, इधर लिख देता हूं. Complete or execute something as planned. Complete or execute something. So STH means something as planned. That is follow through. So the essay जो था वो interesting way में start तो हुआ, लेकिन जैसा plan किया था वैसा नहीं हो पाया आगे चल करके. That means B could be correct.
Follow me but fail to follow me, essay does not follow you, becomes incorrect. Follow out has no meaning at all, so D becomes incorrect. Answer has to be option B. Clear? So look, question number 22, try. Not exactly, Aryan. 21, I just explained it, Ishan. Follow up is done by a person. It is not done by an essay. We are saying the essay started interestingly, na? So the doer of the action here is essay. That's why. %, A, 59% B, 27% C, 2% D. So majority of you have gone with the wrong option. His followers began to fall away. Now, fall away means to reduce in number or support. Reduce or decrease in number, or you can also say support. Something that decreases in number or support is fall away. So his followers began reducing in number. This makes sense. Fall down का मतलब होता है physically गिरना. We are not referring to that. So his followers began to fall down is incorrect. It means to collapse. That is not what we mean to say. A is correct. Fall out. Fall out का मतलब होता है to have disagreement. To have disagreement. Dispute. Disagreement or dispute. Fall in का मतलब होता है to collapse inward. Collapse inward is fall in. You can also say conform or comply with someone, or comply with something or someone. Fall into place, something like that. Right? The answer has to be option E then. Abhisht, sir, shouldn't it be get our point across? Acha, I have not discussed the question as of now. Why option C can't be the answer? C says fall out. Fall out का मतलब होता है have disagreement. So his followers began to fall out. मतलब इसका मतलब निकल के ये आएगा कि इसके अग्रीमेंट्स, उसके फॉलोअर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट होने लग गया है. नहीं ना, उसके फॉलोअर्स का नंबर कम हो रहा है, वो बताना है हमको. भाई आप फॉलोअर्स के बारे में किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि मेरे फॉलोअर्स झगड़ा कर रहे हैं? तो कॉमन मीनिंग लगाना पड़ेगा ना यहां पर हमको. राइट. क्वेश्चन नंबर 23, ट्राई. Aryan, from the context you may choose then. No, Asta, that will be incorrect. Okay, Harshit. Not exactly, Ali. We'll see, Tejas. Okay. 19% B. चलो देखते हैं. We tried to dash point across, but he just wouldn't listen. We tried to get in
point across या get out point across, but he just wouldn't listen. Get over, get off. We try to get in. अभी get in का मतलब होता है to enter. चलो पहले मीनिंग लिख देता हूं मैं. Enter or be included. Enter or be included is get in. Okay. Get out का मतलब तो सबको पता होगा. To leave or escape. Leave or escape. Get over का मतलब होता है overcome. Overcome. और recover. Get over her. बोलते हो ना? Overcome करने के लिए, recover करने के लिए. And what is get off? Get off means get off me बोलते हो आप, मतलब मुझसे दूर हटो. एक मीनिंग वो होती है. और दूसरी मीनिंग क्या होती है? To communicate. Communicate or convey something. Often could be an idea. Communicate an idea or message. That is what we call get off. ठीक है. अब we tried to enter our point. No. We tried to leave or escape our point, but he just wouldn't listen. No. We tried to get over. No. Get off. This question has some grammatical error, I think. इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए. कुछ एरर है उसमें. ठीक है. We tried to get our point होना चाहिए था. Get our होना चाहिए था. ये get, ये out की जगह r है, our है एक्चुअली, तब करेक्ट होता. करेक्ट. It is get our point across. Get our point across, but he just wouldn't listen. मतलब हमारे पॉइंट को हम उस तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो सुनने के लिए रेडी नहीं है. तो get our है वो टी टाइपिंग मिस्टेक है वहाँ. 24th. Try 24th. आदित्य, get r is not a phrasal verb. Get across is a phrasal verb. उसके बीच में हमने r प्रोनाउन डाला है बिकॉज हमारा सब्जेक्ट we है. तो हमारा पॉइंट हम आगे बढ़ाना चाह रहे थे, ये कहना चाहता है वो. अमर, इफ लेट्स से देयर इज माय फ्रेंड, एक फ्रेंड मेरे ऊपर चढ़ करके बैठ गया है. आई एम सेइंग गेट ऑफ मी, कम ऑन, वी आर नॉट किड्स एनीमोर. तो दैट इज गेट ऑफ. 23, the answer is B. There is a phrasal verb Astha. The phrasal verb here is get across. We tried to overcome point. That is incorrect, Aditya. पॉइंट को ओवरकम नहीं करते हम, पॉइंट से रिकवर नहीं करते हम. 24th, 68% have given option C as the correct answer. Let's see. He keeps dash me and I really don't know what I've done wrong. He tries getting in me. ये get in क्या होता है? Get in, interfere or intrude. Interfere or intrude. तो he keeps interfere me. नो, ये तो गलत हो जाएगा ना. इंटरफेयरिंग विथ मी हो सकता था. ठीक है. फिर गेटिंग आउट. गेटिंग आउट क्या होता है? हाँ, सो गेटिंग आउट मीन्स टू लीव. गेट आउट बताया था ना अभी, टू लीव और एस्केप, ये है. देन गेटिंग एट, ही कीप्स गेटिंग एट मी. I really don't know what I've done wrong. Getting at का मतलब होता है to imply something indirectly. Imply something indirectly. और generally ये जो implication होता है, इसमें आता है annoyance, irritation. तो he tries to irritate me, annoy me. I don't know why. I don't know why he does that. I don't know what I've done wrong. That is the meaning. तो ये करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. Getting at. Then getting with. ये क्या होता है? Getting with. He keeps getting with me
and I really don't know what I've done wrong. Getting with, I don't think there is a context, there is a clear cut phrasal verb वाली meaning getting with की, तो it cannot be the correct answer. इसका कोई meaning नहीं लगता है मुझे. Okay, so answer has to be option C. चलो 25th. That is not necessary, Bhavya. Sometimes you may add another word between these two words. Could be have you, could be haven't you, depends on the context, Lalit. Getting in me can also mean something. This, yes, Aryan. What is peeps? I don't know, Harshit. कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? अच्छा 25 सॉल्व करना था, मैंने पूल लॉन्च नहीं किया. आदित्य अग्रवाल, आई थिंक फ्रेजल वर्ब इज अ डिफिकल्ट टॉपिक बिकॉज हम लोग इसको स्कूल लेवल पर पढ़ते नहीं है ज़्यादा, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत कॉमनली हमको दिखता भी नहीं है. तो इसके लिए आपको रीडिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, इनको मेमोराइज ज़्यादा करो, इनके सेंटेंसेस को रीड करो और इनके सेंटेंसेस को यूज़ करो, तो आपको इनका यूजेस समझ में आएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर IIPM. यस, इट इज़ इंपॉर्टेंट. 3 से 4 क्वेश्चन आपको इजीली इसके दिख जाएंगे. Sunil, your syllabus will be finished well before the exam. Please understand this point. I cannot commit a clear-cut date. Soumya, एक बार you can go through the RSMs. I do not know the exact number in which you have these phrasal verbs. एक बार check कर लेना, किसी न किसी में होंगे. Otherwise, I will also check. RSM 6. Okay, RSM 4 और 6 बोल रहे हैं कुछ लोग. Minus marking will be there. +4 -1. No, not in the examination, Karthik. Tranquil मतलब peaceful, Maitreyi. Peaceful. 25% A, 18% B, 3% C, 54% have given option D as the correct answer. Let's see. Have you dashed your history essay yet? Handed up. Handed up का क्या मतलब होता है भाई? It means to submit something, particularly to a teacher or an authoritative figure. Submit something. चलो ये भी हो सकता है मतलब. फिर handed down. Handed down is to pass something down through generations. Pass something down through generations. Generations. Hands on. ये क्या होता है फिर? Transfer or pass something to someone else. Hands on also means transfer. Handed in. Handed in का मतलब होता है to submit something physically. वो होता है handed in. Submit something physically, और ये particularly teacher को कुछ देने के लिए यूज होता है. Refers to a teacher or authoritative figure. Refers to a teacher. तो टीचर की बात चल रही ना, हिस्ट्री ऐसे को सबमिट करना है, तो बेटर आंसर क्या होने वाला है फिर? हैंडेड इन. हैंडेड अप भी इसी मीनिंग में यूज होता है, बट द पॉइंट इज हैंडेड अप आप किसी को भी कर सकते हो, उसमें टीचर और अथॉरिटेटिव फिगर का यूज नहीं होता. सो आंसर हैज टू बी ऑप्शन डी. क्लोज ऑप्शन था ऑप्शन ई, बट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा. इंदौर एग्जाम अभिष्ट. यस दर्शित. देखो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं
अब मेरी बात सुनो सब लोग, अभी कुछ भी टाइप नहीं करना 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए सुनो। बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो आपको हॉलीवुड की मूवीज में मिलेंगे, बट दे आर नॉट एक्चुअल फ्रेजल वर्ब्स। वो सब सारे मेड अप फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिनका ग्रामेटिकली एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है, जो वो मीनिंग यूज करते हैं। तो अगर आप इन मूवीज के बेसिस पे या बुक्स के बेसिस पे, जो नॉवेल्स होते हैं, रोमांस नॉवेल, इन सब के बेसिस पे अगर आप फ्रेजल वर्ब का यूज समझ रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो इनके बेसिस पे कभी मत जाना कि मैंने ऐसा सुना है, मेरे चाचा जी ने ऐसा बोला था, वो कनाडा में रहते थे। तुम्हारे चाचा जी बहुत सारी चीजें कनाडा में करते होंगे, लेकिन गलत भी करते होंगे। तो द पॉइंट इज, आप ऑथेंटिक सोर्सेज से रीड करो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, शिवांश, आई डू नॉट सी एनी सबटाइटल्स ऑन माई स्क्रीन। सबके लिए अनुभव, आर्यन, ग्रामर के लिए आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी एप्स। हैंड ओवर कैन ऑल्सो कम, यस अवनी। हाँ, करेक्ट करेक्ट। जब कोई अथॉरिटेटिव फिगर आपको कुछ देता है तो आप हैंडेड अप यूज करते हो, जब आप उसको वापस करोगे तो हैंडेड इन करते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 एवरीवन, ट्राई। ट्राई। Yes, Ridhima, there will be a test. That will be available on your portal, उस पे देख चेक करते रहना। हैंड्स ऑन का मतलब होता है टू ट्रांसफर समथिंग। आदित्य, Darshan, please keep checking your portals. I am not aware when there will be a test. Every detail will be available on your website. %49 option C, 38% option B, 8% A, 6% option D. चलो देखते हैं। He was dash the calendar of 2012. He was dash the calendar of 2012. Okay. Hit on the calendar. Hit on the calendar मतलब, hit on का मतलब होता है to discover something. Discover. Discover the calendar of 2012. No. इसको it can also be used to cover up something. To cover up. Sorry, cover up नहीं. Sorry. Wait. Can also mean come upon something. Yes, it means come upon something, not cover up. तो hit on का एक और मतलब होता है, I was hit on by a lot of people today. My girlfriend to me. So that means a lot of people approached her. That is the meaning of hit on. Hunting up. Now what is hunting up? It means to search for or seek out something. Search for something is hunting up. I was hunting up the calendar of 2012. Okay. Hunting out. It also means to search or seek. Hit down का मुझे कोई मीनिंग अभी तक नहीं मिला है। Hit someone up मैंने सुना है, पर hit down मैंने नहीं सुना है। This is not correct then. अब B और C में से देखते हैं। He was hunting out the calendar of 2012. He was hunting up the calendar of 2012.
अगर आप hunting up बोले तो this is probably related to looking up on the internet. एंड अगर आप कैलेंडर ऑफ 2012 अगर आप फिजिकल कॉपी ढूंढ रहे हो तो हंटिंग आउट हो जाएगा. नाउ यू कुड गो विद आइदर ऑफ देम. मुझे बेटर ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन सी. फिजिकली आई वाज लुकिंग फॉर द कैलेंडर. ओके. हाँ, हिट का वो मीनिंग होता है, बट हिट अलग अलग, हिट अकेला यूज नहीं हुआ है, हिट एक प्रपोजिशन के साथ यूज हुआ है, तो दैट मीन्स उसका डिफरेंट मीनिंग होता है वो फ्रेजल वर्ब है. हंट डाउन होता है, हाँ हंट डाउन तो होता है. We hit down the black man. That works. Hit down. हाँ, in that case we can use it. इसमें उसका मतलब निकल के आ जाएगा कि उसको उसने मार दिया. ठीक है. नो कृष्णम, बेटर वन इज ऑप्शन सी. हमको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है. चलो क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई करो. 27. Divyanshi, someone asked me that will there be a test? So I replied that there will be a test. I am not aware when these tests will be conducted and on what topic will these tests be conducted, because all of these things are decided by someone else. So I do not have a contribution in that, and that is why I'm not aware of that. (10:15) Amar Prakash. That's the time. Ishan, you'll have to check your portal. If they are available, you can write those tests. Harshit, if you're looking up a calendar, you can look up the calendar in a second. If you want the calendar of 2012, you can look it up in 1 second. I mean to say that I am trying to find out the physical copy of it. Or second thing is, hunting out is not actually a formal phrasal verb. It's a casual phrasal verb जो colloquial language में हम यूज करते हैं. एंड अभी मैंने बताया जो मूवीज में यूज होता है बहुत ज्यादा टाइम वो करेक्ट नहीं होता है. तो इट्स लाइक द वन दैट वी यूज इन मूवीज. That is an informal phrasal verb. The formal phrasal verb is hunting out. Yes, there may be, Anshuman. Yes, Atharv. %71% have given option C as the correct answer, 10% D, 13% B, 6% option A. चलो देख लेते हैं. When the authorities dash his background, ये तो पूरी आधी सेंटेंस लिख करके दे दिया उन्होंने, आगे क्या वो तो बताया ही नहीं. चलो एनीवे, सो व्हेन द अथॉरिटीज इंक्वायर्ड इनटू हिज बैकग्राउंड. नो, व्हाट इज इंक्वायर्ड इनटू? सो 2 बार लिख दिया इन्होंने इंक्वायर इनटू. सॉरी, कुछ गलती हो गई. तो इंक्वायर इनटू मींस, व्हाट डू यू थिंक? टू इन्वेस्टिगेट. सो ये टू लिखा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इन नहीं पढ़ा. सो इंक्वायर्ड टू कुछ नहीं होता है, सॉरी 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 सॉरी. इंक्वायर्ड इनटू होता है. हाँ, इंक्वायर्ड इनटू मतलब टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन. इंक्वायर्ड ऑफ क्या होता है? इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता है, इट हैज नो मीनिंग. इंक्वायर्ड डाउन कोई मीनिंग नहीं होता है. So the correct preposition that is written after inquire is inquire into. You inquire into someone, that means you investigate someone, you examine someone. So the answer has to be option C. Clear everyone? Do we have any doubts? पोर्टल पे 10:30 लिखा हुआ था. I'll have to check that. चलो, question number 28. Try everyone. Question number 28. I'm launching the poll now.
Done. Aditya, that inquired is ENQUIRED. Inquired about. That means I asked about this person. So that is not a phrasal verb. Dhruv, you can skip that question. You guys have a very bad habit. Very bad habit. Instead of focusing on what is going on, you just keep sticking to that one thing. And I explained this, that hunting, the first one, hunting up is a colloquial phrasal verb. That is not a formal phrasal verb. और अभी मैंने बताया एग्जाम में आपको फॉर्मल फ्रेजल वर्ब के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं. (63% option A, 16% B, 3% C, 17% D. चलो देखते हैं. I shall dash nothing from you. Keep back. I shall keep back nothing from you. What is that? Keep back means to withhold. Sorry, फिर से लिख देता हूं मैं. It means to withhold. मैं क्या लिख रहा हूं? Withhold और नहीं डबल एच आता ना. सॉरी. Withhold or retain something. हाँ, तो withhold or retain something. That means I will not retain something from you. I will tell you everything. That is what I'm trying to say here. Keep up. Now what is keep up? It means to continue or to sustain something. Maintain something. Keep up everyone, keep up. What does it mean? Pace बना करके चलते रहो. So that is maintain the pace. Keep down, keep the volume down. What does it mean? To reduce, suppress, reduce. Control. Keep in. What is keep in? To confine. To restrain something. Confine or restrain something. Not restraint, restrain something. तो आंसर क्या होने वाला है फिर? Keep back. Option A. Is it clear now? Hide something. Yes. Why not keep in? Keeping का क्या मतलब होता है? To confine something. किसी को जकड़ कर रख लेना, किसी को जाने नहीं देना. So I shall keep in nothing from you. It is used for objects, physical objects. Keep in is used for physical objects. Keep back is used for information. So better is A. अर्नव, मैंने अभी बताया physical objects. Clear अर्नव? कर्तव्य? Okay. Question number 29. Try. Yes, Avni.
Arnav, sometimes you have to understand from the context as well. What I'm trying to say here, I'm talking to a person and I'm saying that I will not keep anything from you. What do I mean by that? That I will give my telephone to you. Do I mean that? Or I mean to say that I will not hide any information from you. What do you think? Okay, Anchal says 28 again. I shall dash nothing from you. I shall keep back nothing from you would mean मैं सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे पता है, जो भी मुझे पता है, मैं आपको बता दूंगा, मैं कुछ भी छुपाऊंगा नहीं, हाइड नहीं करूंगा. तो इट मेक्स सेंस. कीप अप का मतलब होता है, इफ आई से कम ऑन कीप अप गाइस, दैट मीन्स अपने पेस को मेंटेन करके रखो. तो इसका कोई भी कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग नहीं है. कीप डाउन का मतलब होगा कैन यू कीप डाउन अ बिट. दैट मीन्स क्या आप वॉल्यूम कम कर सकते हो, शोर कम कर सकते हो, नॉइज कम कर सकते हो. दैट इज ऑप्शन सी. इसका भी इस कॉन्टेक्स्ट से कोई कनेक्शन नहीं. कीप इन का मतलब हो जाएगा यू हैव टू कीप समथिंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू समथिंग, तो दैट इज कीप इन. आई एम कीपिंग इन योर कोट, तो आई शैल कीप इन नथिंग फ्रॉम यू. मतलब मैं आपका कोट या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास में नहीं रखूंगी, आपको दे दूंगी. नाउ थिंक अबाउट इट. जब आप किसी से बात करते हो तो डू यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स और डू यू टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन, टेलिंग समवन. ये सारे एग्जांपल्स मतलब ह्यूमन लाइफ से ही आए हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा ना. कैन यू सो क्वेश्चन नंबर 16? अब 16 कहां से आ गया हर्षित? देख लो, चलो. दिस इज 16th. Aryan, neither of them, only Abhishek. चलो क्वेश्चन नंबर 29, ट्राई एवरीवन. अच्छा 29 हो गया, 30 करना है. अभी डिस्कस नहीं किया ना, चलो डिस्कस कर लेते हैं. द स्टीमर वॉज डैश बाय स्टॉर्म्स, नॉक्ड इन. ये नॉक्ड इन क्या होता है भाई? इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है. इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, फॉर्मल मीनिंग. नॉक्ड ओवर का मतलब क्या हो जाएगा? इट मीन्स टू ओवरटर्न. ओवरटर्न, पलट जाना, दैट इज नॉक्ड ओवर. इसी को बोलते हैं कैप्साइज. जो शिप्स हो जाते हैं ना उनको कैप्साइज बोलते हैं, शिप जो पलट जाते हैं, दैट इज कैप्साइज्ड. तो ये बोट और शिप के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है. इट कुड बी करेक्ट. नॉक्ड अबाउट, नॉक्ड अबाउट इज टू एक्सपीरियंस रफ ट्रीटमेंट. टू एक्सपीरियंस रफ ट्रीटमेंट. ओके, द स्टीमर वॉज नॉक्ड अबाउट बाय स्टोन्स. तो स्टोन्स की वजह से रफ ट्रीटमेंट, चलो ठीक है, कुछ भी हो सकता है. नॉक्ड अप का मतलब होता है टू बिकम प्रेग्नेंट. टू बिकम प्रेग्नेंट. तो स्टीमर की बात चल रही है, वो तो प्रेग्नेंट हो नहीं सकता. तो दैट मीन्स द स्टीमर वॉज नॉक्ड ओवर या फिर नॉक्ड अबाउट. अब स्टीमर इज अ वेसल जिसमें आप स्टीम बनाते हो, तो वो एक्सपीरियंस कर रहा है रफ ट्रीटमेंट, ये तो नहीं हो सकता. अच्छा ठीक है, तो आंसर हैज टू बी ऑप्शन बी. देन स्टीमर जो था स्टोम की वजह से पलट गया, तो ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. आई थिंक मैंने सी मार्क कर दिया था, आई एम सॉरी. 28 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. 29 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्या कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बोलो भाई. मुझे लग रहा है तुम लोग प्लान बना रहे हो अभिषेक सर का मर्डर कैसे करें. यस अथर्व, यू कैन स्पीक नाउ. Good evening, sir. यस, गुड इवनिंग. Sir, I had a doubt in question number 22. 22. Yes. Okay, 22 is this one. Yes. Sir, in this question, it's a general statement. How can we limit ourselves to only one perspective? What if we are talking about someone like Lord Buddha and we say Lord Buddha, and then we have a follow-up statement that his followers began to, because then we can say they began to fall out. Hmm.
they can have a argument, right? Huh. So in that situation, when you are given the reason why there is going to be a disagreement, then you can choose fallout. In general, when we talk about followers, there is only one context in which we talk about followers, and that is either your followers increase or your followers decrease. If there is a reason why they may disagree, they may have a dispute, then that reason will be written there. So on the basis of that reason, then you may eliminate the other options and choose fallout. That's not a problem. All right, so thank you. Okay. Now, any other doubts, anyone? Sir, but how can knocked up meaning to be pregnant? That is the meaning, Lalit. Knocked up means to become pregnant. It's an informal slang. Yes, Anubhav. Knocked up का second example. What is the second example? और एक और मीनिंग होता है knocked up का, to create something hastily. To create something hastily. जल्दबाजी में कुछ चीजों को क्रिएट करना is to create something hastily. So वो भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर. So answer has to be option B then. क्लियर हुआ? पोल का रिजल्ट मैंने पहले शो कर दिया अनुराग. फॉर एग्जाम्पल माई बेस्ट फ्रेंड knocked up his best friend. What do I mean by that? Tell me. Very, very relatable? How is that, Aryan? 29 मैंने पहले ही कर दिया. आई थिंक नहीं हुआ, पता नहीं कुछ रीजन से वो नहीं हुआ होगा. नो जानवी. Aryan, please take care of your best friend. Correct, Manan. Okay. Your best friend made his best friend pregnant. Yes. Knocked out and knocked up. दोनों अलग अलग है समर्थ. Knocked out मतलब वो पंच वाला जो होता है. ठीक है, चलो 30. Question number 30. Everyone try. Sir, please tell a joke. I feel like Siri sometimes. You guys keep asking me these questions, and I'm obligated to answer these questions. What shall I say? Yesterday I met a very intelligent girl. Or shall I say a loyal girl? That is a joke, Aryan. For someone who's in his 20s or 30s would laugh. No, Dhruva. As of now, I only need light, not dark. I know, Shanaz. Is there a thing like that? Yes, Darshit. Knocked about. Aryan, knocked about का मतलब होता है किसी के one second. हाँ, so किसी के वजह से एक रफ ट्रीटमेंट को एक्सपीरियंस करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर my brother made a mistake and because of that I was knocked about by his teacher. तो रफ ट्रीटमेंट उसके टीचर ने मुझे दिया. So that is knocked about. I wish, Nandan. चलो, are you guys done? देखते हैं. 54% A, 11% B, 24% C, 11% D.
ओके, नाइस। चलो, द लेबरर्स dash for lunch. तुम्हें ऐसा नहीं लगता that the laborers started working at 9 in the morning and around midday, around 12 or 1, they wanted to take a break for lunch. So what I mean to say here is they took a short break for lunch. Now, no, so now knocked off means what? It means to finish work. To, sorry, क्या लिख दिया? Fish लिख दिया मैंने, जबकि मैं तो खाता भी नहीं हूँ. To finish work. To finish work or to stop temporarily. To stop temporarily. Temporarily. इसमें particularly in the context of a break. तो in the context of a break. तो जब आप short break लेते हो तो you say I'm gonna knock off for a few minutes or knock off for lunch and then we'll continue. So I'm going to take a break for lunch. So that means A makes sense here. Then we have keep down. अभी बताया था keep your volume down. Keep down means to keep something under control. Keep under control or reduce something. Reduce something. Then we have knock away. अभी बताया knock away तो नहीं बताया था. So knocked away is no formal phrasal verb. There is no formal meaning of the word of the phrasal verb knocked away. Knocked over अभी बताया it means to overturn, to capsize, पलट देना, पलट जाना. So इसका lunch से कोई connection नहीं है. Knocked away is no phrasal verb. Keep down means to reduce something, to put something under control. And knocked off मतलब to take a break. तो best answer बचता है option B, that is to knock off, to take a break. ठीक है. Aditya, how do you know these things about me? That's good, Lalit. How will we get to know it's formal or not? Because Shaurya, in that case, you will need to read from the book. Whatever is written in the book will be formal. If it is not written in the book, it will not be formal. Simple. अगर आप मूवीज से सीख रहे हो फ्रेजल वर्ब, दैट विल बी इनकरेक्ट, बिकॉज मूवीज में कुछ भी फ्रेजल वर्ब बना लेते हैं. ओ माय बायो ऑन टॉप रैंकर्स. अच्छा ठीक है, फिर ठीक है. आई यूज्ड टू वर्क एज एन इंजीनियर, नॉट एनी मोर. Shaurya, is it clear now? Knocked away. No, Dhruv. No. Two same options. हाँ, वो गलती से आगे होंगे. चलो, next question everyone. 31. Try 31. इसमें दो ऑप्शन सेम आ गए. आई थिंक कुछ गलतियां है. एनीवे, टाइम हो चुका है. कुछ डाउट्स है क्या बाय द वे? एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ कपल ऑफ डाउट्स नाउ. Aditya Narang, do you want to speak? Now questions unrelated to the topic that we have discussed. Just for 1 minute, unrelated questions to the topic. Aditya, I can't hear you. Kabir, you can speak now. Kabir. By the way, I am not able to see all the text because बहुत सारे texts आ रहे हैं. आपने जो सजेस्ट की बुक्स है Sorry, मार्टिन, Kabir, I can't hear you clearly. तो सर मैं उसको अभी मतलब पढ़ तो रहा हूँ, लाइक हाफ खत्म कर दिया, बस सर प्रोग्रेस नहीं दिख रहा. एंड Okay. जब ऐसे मोमेंट आते हैं लाइक सेल्फ डाउट होता है, तो सर अगर आपकी सिचुएशन में होती तो क्या करते हैं? और मुझे पता नहीं, तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है कबीर. सर आई गेस नेटवर्क प्रॉब्लम. नेटवर्क प्रॉब्लम. यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, वहां पे बात कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके सर. गायत्री, यू कैन स्पीक नाउ. Not able to hear you, Gayatri.
Siddhant, knocked over does not mean to visit. Okay, anyway, if I'm not able to hear you, I think that's a network problem या कुछ portal पे problem हो सकता है. That's not a problem though. You can contact me on Telegram और मैं उस पे आपसे connect कर लूँगा. Please understand that we have a very limited time. We have only 1 hour 15 minutes. And within those 1 hour 15 minutes, what I'm supposed to do here is, I'm supposed to solve your questions, solve your queries. I'm supposed to finish a topic. I'm supposed to teach the concepts. I'm supposed to finish the questions as well. And in the meantime, if you ask questions, if you raise your hands, I'm supposed to answer those as well. So that means very limited amount of time and a lot of things to do. That means मैं कुछ doubts को गलती से छोड़ सकता हूँ. गलती से मतलब मैं नहीं देख पाता हूँ, बिकॉज बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो नहीं देख पाता हूँ. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि मैं इंटेंशनली ये चीजें नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा भी एक अपना टारगेट है कि मुझे इस टॉपिक को आज एटलीस्ट फिनिश करना है, इसीलिए मैं उस स्पीड को मेंटेन करके रख रहा हूँ. राइट? सो इसमें इफ यू थिंक दैट इट इज माई फॉल्ट, आई डोंट ब्लेम यू, बिकॉज यू आर फ्री टू थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट टू फील. बट द पॉइंट इज, अगर आपको डाउट्स होते हैं और वो लेक्चर में क्लियर नहीं हो पाते, देयर आर अदर मोड्स टू कॉन्टैक्ट मी. राइट और नॉट? तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि अभिषेक सर ने मेरा डाउट पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं है. उनको टाइम नहीं मिला पढ़ने का. 50 डाउट्स एक लाइन से 50 लोगों के, तो अभिषेक सर नहीं पढ़ पाए. दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी टू रीड 50 टेक्स्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड आंसर ऑल ऑफ देम इन द क्लास. सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट? ठीक है? तो अगर कोई डाउट छूट रहा है, ऐसा मत सोचो कि वो छोड़ा गया है, बल्कि ये सोचो कि सर देख नहीं पाए. और सर अगर देख नहीं पाए, दैट मीन्स आप उनको टेलीग्राम पर भेज दो. भाई मैंने तो ये ऑप्शन आपके लिए खुला रखा है ना. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप उसको यूज कर रहे हो या नहीं. हाँ, आई मे टेक सम टाइम टू रिस्पॉन्ड ऑन टेलीग्राम बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम बिजी फॉर 8 to 9 hours a day. तो उसके अलावा जो टाइम मुझे मिलता है फ्री टाइम, उसमें मैं आपको आंसर कर देता हूं. I hope you understand my point now. Yes, there will be negative marking in theta questions, Lalit. ठीक है? So if I have not answered your questions, please don't worry. Just text me the question. I will get back to you within 24 hours to 48 hours, depending on the time that is available to me. Sometimes मैं immediately response देता हूँ जब मैं free होता हूँ, या जब मैं बहुत ज़्यादा busy होता हूँ तो 1 या 2 दिन भी लग सकते हैं. That depends. ठीक है? चलो, so as of now, did you learn something new in this session, by the way? Yeah, you can try it once, because अगर मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया तो टाइम बहुत आगे बढ़ जाएगा. उससे बेटर होगा यू कैन ट्राई द क्वेश्चन, एंड अगर आपको डाउट्स होते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी लेटर. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आई विल अपलोड दिस फाइल. कल तक ये हो जाएगा अपलोड. ध्रुव, प्रैक्टिस मोर, रीड मोर. एनीवन, एक और important point, I will not be responding to your texts after 11 p.m. in the night. I am exhausted by 10:30 itself because of the work I do. तो उसके बाद में मैं फोन को हाथ भी नहीं लगाता हूँ. इसीलिए बेटर ये होगा that you text me the next morning. Yes, answers will be there. चलो, bye, good night everyone. Take care. Have fun.